The procession has entered the pandal. Please stand up. The procession has entered the pandal. Played. Bismillahirrahmanirrahim. I request Professor Muhammad Shoaib Shafi, President CPSP, declare the convocation of the College of Physicians and Surgeons, Pakistan open. Bismillahirrahmanirrahim. I, Professor Muhammad Shoaib Shafi, President, College of Physicians and Surgeons, Pakistan, declare the 55th Convocation of the College of Physicians and Surgeons, Pakistan open. I request Dr. Hafiz Abdul Kabir to recite few verses from the Holy Quran. ये कुरान पाक की सबसे मुख्तसर सूरत है जिसको सूरतुल असर कहते हैं। तो इसके बारे में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अगर पूरा कुरान ना भी नाजिल हो तो ये एक सूरत उम्मत की हिदायत के लिए काफ़ी है। तो ये हम तिलावत करते हैं, उसके बाद इसका तर्जुमा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इसका तर्जुमा है कि ज़माने की कसम अल्लाह जल्ला शानुहु उठाकर खा रहे कि बेशक सारे के सारे इंसान लॉस में हैं, खसारे में हैं और फेलियर है, मगर 4 किस्म के लोग हैं जो इस फेलियर से बच सकते हैं, जो पास हो सकते हैं, जो कामयाब हो सकते हैं। अब ये 4 पेपर हैं और हर पेपर कंपलसरी है। इल्लल्लज़ीना आमनू, एक तो ईमान बनाना है अल्लाह पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आखिरत पर।
फ़रिश्तों पर और गैब के सारे नक्शों पर वामिलुस्सालिहात अच्छे अमल करने हैं, वो अमल करने हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुन्नत अमल करके दिखाए, इज्तमाई भी इनफरादी भी। 2 पेपर हो गए। तीसरा पेपर है वतवासौ बिल हक़, कि दावत देनी है उस चीज़ की जो हक़ है, दीन की दावत देनी है, और वतवासौ बिस्सब्र, और ख़ुद भी सब्र करना है, दूसरों को भी उस इस्तिक़ामत के लिए तैयार करना है। तो हम कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी इन 4 कंपोनेंट्स पे आ जाए। तो मैं भी कोशिश करूँ, आप भी कोशिश करें, अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। All the recipients of fellowship and membership are requested to rise from their seats for oath administration and repeat the words of oath after me. In the name of God Almighty, I faithfully promised to maintain the traditions, the dignity, the standards, and ethics of College of Physicians and Surgeons Pakistan. That I shall devote myself to those medical activities which come within the scope of my profession. That I shall follow those methods of prevention of disease, diagnosis, and treatment which, according to my ability and judgment, are consistent with best evidence medical practice. In this endeavor, I shall always strive to do no harm. When in doubt, I shall seek the counsel of my colleagues. I shall willingly assist others and advance knowledge in my specialty to the best of my ability. May God help me in this endeavor. Kindly keep standing. I request Professor Muhammad Shoaib Shafi, President of College, to admit them to the fellowship and membership of the College of Physicians and Surgeons of Pakistan. By virtue of the powers vested in me as President of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, under Section 9, Subsection 2, Clause F and G, read with Rule number 11.1, Sub-Rule 1A of the CPSP Act 1962, I admit you to the fellowship and membership of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, and in token thereof, I present you the diploma and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of this diploma. Please take your seats. Now I request Professor Muhammad Shoaib Shafi to deliver his convocation address. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Honorable Chief Guest, Professor Shabir Nasir Sahab, CPSP Fellows and Counselors, distinguished members of medical profession, guests, my dear graduating fellows and members, ladies and gentlemen. It is a matter of great pleasure for me to welcome Professor Shabir Ahmed Nasir, the Honorable Chief Guest of 55th Convocation of College of Physicians and Surgeons Pakistan. We indeed are grateful to your honor, sir, for taking out time from your very busy schedule of engagements to grace this occasion. I am glad to state that CPSP is starting its 55th series of convocation from Multan. In this convocation, around 476 CPSP qualifications, 378 fellowship,
and 98 memberships are going to be conferred upon doctors hailing from Multan and whole of the South Punjab. The occasion clearly speaks of the national stature of the college. I take this opportunity to congratulate all the recipients of CPSP qualifications for achieving this milestone of their career. I would also like to extend my felicitations to the families of the graduating doctors for having made great sacrifices to enable their loved ones to attain this milestone, which are now sitting in the next hall, all the families. Ladies and gentlemen, College of Physicians and Surgeons Pakistan, as the premier postgraduate institution of the country, was established in 1962 when there were few medical colleges producing a small number of medical graduates, grossly insufficient to meet even the basic health needs of the population. A tiny number of medical graduates belonging mostly from the privileged classes did manage to acquire postgraduate diplomas, mostly from the UK, were not even able to introduce the concept of specialist care in the country. Ladies and gentlemen, it certainly was fortunate that the reality soon dawned upon the medical profession that an organized, effective and efficient healthcare system is not possible unless both graduates and postgraduates are produced within the country in adequate numbers. 50 eminent specialists of the undivided Pakistan gathered under the leadership of Lieutenant General Wajid Ali Barki and made the dream of establishing a postgraduate medical institution at national level come true in 1962 in the form of College of Physicians and Surgeons CPSP, Pakistan. Ladies and gentlemen, CPSP made a modest beginning by offering membership programs in essential disciplines, initially followed by 2 fellowships programs. Today it offers, alhamdulillah, 78 fellowships, 22 membership programs, and contributes around 95% of specialists of the country and almost 100% specialists of the Pakistan Armed Forces. The huge network of training is spread all over the country as well as overseas. The training network in the country include 274 accredited institutions, 4,616 supervisors or mentors or teachers, and almost 30,000 postgraduate trainees across Pakistan and around the world. Now just coming to statistical strength of Multan, there are 11 institutions, there are 208 supervisors, and there are 1,192 trainees in Multan alone. And next is the statistical strength of emergency medicine, critical care medicine. Now you see the emergency medicine was introduced in 2009, almost more than 11-12 years back. And there are only 12 institutes in Pakistan which are recognized. There are only 29 supervisors throughout Pakistan, and there are 240 trainees. Mostly trainees are either in AKU or in Mayo Hospital or in Shafa. And there are other institutes also, but they are mostly in Sindh province. And it is so painful for me to see that in South Punjab, there is no institute recognized for emergency medicine. There are no supervisors, there are no trainees. The other most important department of any tertiary hospitals is the critical care medicine. And in critical care medicine, there are 20 institutes recognized throughout Pakistan, 21 supervisors, there are 68 trainees. And it's so pathetic to see that there is no critical care department recognized by CPSP in Multan or any part of South Punjab. These figures are neither encouraging nor makes us proud. The need is that the hospitals in major cities of the province are upgraded to provide specialist care in essential discipline so that postgraduate training program could be initiated in these hospitals. CPSP is prepared to establish new regional centers in various cities of Punjab
as soon as its training network is extended to those cities. Ladies and gentlemen, CPSP is aware of its social and academic responsibilities, which require that its graduating specialists are competent, considerate, caring, as well as its qualification meets international standards. CPSP therefore keeps itself abreast of the current trends and education and evidence-based methods for training and assessment of postgraduate residents in various specialties throughout all the hospitals. The hallmark of CPSP qualification is the standardization of both its training and examination. Consequently, a resident receiving training in Islamabad or any part of the country has to acquire same set of competencies and to demonstrate acquisition of those competencies in the examination for the award of CPSP fellowship or membership qualification. During training, residents are coached formally through mandatory workshops and informally through the training are sensitized regarding their professional and social responsibilities towards the patients and the public, professional colleagues, other members of the healthcare team and the profession as a whole. The training is now being monitored throughout the tenure through electronic e-log system, e-logbook. Ladies and gentlemen, assessment drives learning is an old saying but has a great bearing in medical education. CPSP is encouraging supervisors to conduct formative assessments throughout the training in the form of periodic tests and report the results in e-log. A new initiative is being taken by the college with the introduction of set of tools of formative clinical assessment at the workplace during each quarter of the training. This initiative of workplace-based assessment is going to provide a trajectory of successful achievements or otherwise of various clinical competencies during each quarter of training, along with constructive feedback to overcome the identified deficiencies. Ladies and gentlemen, CPSP is proud to have developed a strong system which contributes towards its steady progress and includes number 1, complete autonomy and financial self-reliance. The autonomy of CPSP enjoys and jealously guards is derived from its financial independence and self-reliance. CPSP neither expects nor accepts grant from any government or non-governmental agencies. Instead, it welcomes collaborating with all stakeholders in upgrading training sites by providing more facilities and financial support of trainees and supervisors in the form of minimum stipend, financial assistance to attend workshops, courses and conferences. Democratic governance. CPSP holds 20-member council elections after every 4 years of its executive officers each year. Academic linkages for evidence-based learning. CPSP heavily invests on developing academic linkages to learn and incorporate new trends and methodologies in its training and examinations. Number 4 is the continuous upgradation. It also heavily spends on developing new centers and upgrading the existing systems. Ladies and gentlemen, establishing an institution is a difficult task, but to maintain and ensure its continuous progress is even more difficult. Each successive council of the college has made a significant share in the progress of the college and in translating vision of the college into a tangible reality. The present council is determined to consolidate the advances already made and to explore more areas which could help in further improving training program of the college as well as specialist care in the country. I conclude my speech by thanking the chief guest once again, sir, for his gracious presence, and you, ladies and gentlemen, for patient listening. Thank you very much. आप प्लीज़ आपकी आवाज़ें यहाँ तक आ रही हैं, खामोश हो जाएं प्लीज़, डेकोरम का ख्याल रखें. Now I request the Honorable Chief Guest to deliver his speech.
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहि करीम. Mr. President Shoaib Shafi, Vice President Khalid Gondal, the council members and respected teachers and dear fellows and also the members, Assalamu alaikum. मुझे इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मुझे ये स्पीच के लिए नहीं कहेंगे और अब सडनली अनाउंस करके बुला लिया है. तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मेरे भाइयों और बहनों कि CPSP इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब. इसकी ट्रेनिंग, इसकी फंडामेंटल्स इन ईच स्पेशलिटी एंड उसकी फिर स्पेशलिटी के आगे सारी मेंटेनेंस एंड देन द कंटिन्यूअस फॉलोअप is really great, and this is not second to none in the world. We are really now on top of things in the whole of the world. इसमें प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा था कि अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स. मैंने एक बात और करनी है, वो ये है कि आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करनी है और जो लोग बाकी जो टीचर्स जाके आप बन जाएंगे अंडर ग्रेजुएट, वहाँ आपसे हेल्प लेनी है. हमारे इस वक्त सिस्टम में जो बिहेवियरल साइंसेस की बहुत डेफिशिएंसी है. It bothers me when I read it in the newspaper or hear it on the television कि हर तकरीबन 7वें दिन डॉक्टर्स की लड़ाई हो गई है पेशेंट के अटेंडेंट के साथ. उसकी डेफिशिएंसी मिस्टर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सर, उसकी डेफिशिएंसी ये है कि वी डू नॉट टीच आवर अंडर ग्रेजुएट्स एंड रिस्पेक्टिवली द पोस्ट ग्रेजुएट the fundamentals like breaking the bad news to the attendants. We suddenly tell them, oh, tera pyo mar gaya. But this is not the way. इसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत हम तमाम सीनियर्स को भी ये बातें आनी चाहिए, how to break a bad news to the relatives. And number 2, इसमें काउंसलिंग जो है वो, हालांकि मुझे पता है एज एन एग्जामिनर इन CPSP it is there, but ये somehow or other it's being neglected by the new fellows, new teachers, new students going back down to the undergraduates. ये सारे इसको छोड़ रहे हैं. तो मेरी ये रिक्वेस्ट होएगी कि सारे मिलके आप और मैं और हम सब इसमें जो काउंसलिंग है उसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए जितनी डायग्नोसिस की. क्योंकि डायग्नोज आप कर लेते हैं लेकिन वो तो आपके यहाँ होती है और यहाँ होती है, लेकिन रिलेटिव्स को आपने कुछ भी नहीं बताया होता, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया होता व्हाट इज़ द सिचुएशन एंड व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिस्टम सेटअप और क्या इसकी आउटकम क्या हो सकती है. फिर जब वो सडनली यू लूज़ द पेशेंट and they lose their temper and they start beating the doctors. मुझे इससे बहुत दुख होता है. ये आप लोग, you are supposed to be the cream of the nation. ये आप लोगों से ये वाली बातें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए. तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने ये इस सिस्टम को आप लोगों ने टेकअप करना है डाउनवर्ड्स इनटू द अंडर ग्रेजुएट्स. वहाँ से ये आप लोगों ने उनको ट्रेन करके ऊपर फॉर द फेलोशिप एंड मेंबरशिप जो भी करें वो उसके लिए लेके आना है. ये मेरी एक रिक्वेस्ट है और ये आई एम श्योर कि आप इससे एग्री करेंगे कि ये हमारी एक डेफिशिएंसी है. सर, मैंने अपने यूनिवर्सिटी को पूरा सिस्टम बना के
जिसमें पूरा इसका करिकुलम, पूरा इसका सारा टेबल बना के भेजा था फॉर स्टार्टिंग behavioral sciences BSc honors, but something went wrong, I don't know. It's still there. It's still lying there. Behavioral sciences is only done in two places in the country. One is Fatima Jinnah University in Rawalpindi, and the other I think is in Karachi. That's it. There is no other place where there is anything like behavioral sciences set up or anything regarding the training and tuitioning of the young doctors. ये सारी चीज़ें एक्चुअली आप लोगों के तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये सारी आनी तो हमें यंगस्टर्स अंडर ग्रेजुएट को चाहिए, बट यू आर गोइंग टू बी डीलिंग विद देम, यू आर गोइंग टू बी नाउ mending them and teaching them and training them in their behaviors. So please, my request कि आप उनको ये ज़रूर हर एक को ये ज़रूर समझाएंगे और उसको सिखाएंगे कि ये कितना ज़रूरी है पेशेंट्स डॉक्टर्स रिलेशनशिप के तहत ये सारा सिस्टम. इसके बाद ये मेरे हिसाब से this institution and particularly the Multan branch is really doing a wonderful job, और हम सब आपके पूरी काउंसिल के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर करवा दी हैं. यहाँ पर अब जो तो और ये जो कॉलेज है आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह ये every time, every day and every moment it's going up and up, and you are now gaining a wonderful reputation. आपके गिर्द आपके अगेंस्ट चंद एक लोग आपको ज़रूर सुनेंगे भी और नज़र भी आएंगे, but don't care and don't bother about that. वो बात सुन लेंगे आप, सुनने के बाद आपके अंदर होएगी और you will analyze it कि ये है क्या, उसको आप अपने तौर पर ठीक कर देंगे, बट डोंट वरी अबाउट थिंग्स. लोग बी शुएब शफ़ी, बी खालिद गोंदल, बी रिशाद, बी एनीबॉडी, you will have people who would be jealous of you, sir, and they will keep on passing not good remarks. I would not say the other words. तो उस पे आप लोग CPSP and the council should not take any note of it. Just please keep on progressing, keep on working, and keep on doing better job and keep on improving it. I think that will be enough for me as well, and I have taken enough time of you. Thank you very much. Thank you very much, Professor Shabir Ahmed Nasir Saab, our ex-principal, Nishtar Medical College, and now principal, and you can say anything, patron of chief, you can say director of Multan Medical Dental College. Thank you, sir, for your nice advice. College of Physician and Surgeon Pakistan has a tradition of awarding gold medals to its meritorious students. I request the chief guest to award the gold medal to Dr. Arusa Khalid. Professor Muhammad Sultan Faruqi Medal. This medal is sponsored by Professor Sultan Faruqi since 1983. It is awarded to a candidate who scores highest marks in FCPS Part 1 examination amongst all the specialties, with the proviso that such marks are not less than 70%, and FCPS examination has been passed in the first attempt. This medal is awarded to Dr. Rusa Khalid for the year 2020. She graduated from Quaid-e-Azam Medical College, Bahawalpur, completed house job from Bahawal Victoria Hospital, and passed FCPS Part 1 exam in November 2020 session.
in the subjects of medicine and allied by scoring 95.83% marks. Dr. Rusa Khalid. Under CPSP Section 2G, College of Physician and Surgeon Pakistan award fellowship of the College of to the consultants who have passed examination from other renowned institutions of the world. I request the chief guest to award the fellowship. Professor Khalid Masood Gondal, Council CPSP and Vice President, is requested to read the citation of Professor Abu Bakr Shahid. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है डॉक्टर अबू बकर शाहिद की साइटेशन रीड करना उस हाल में जहां आज के चीफ़ गेस्ट हम सब के उस्ताद प्रोफेसर शबीर नासिर साहब है। अभी जब तशरीफ़ लाए तो मुझे 1986 का ज़माना याद आ रहा था जब मेडिसन में हम अपीयर हो रहे थे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में, और शबीर नासिर साहब हमारे एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर थे। आपके आने का सर बहुत शुक्रिया। और साथ राना अल्ताफ़ साहब को देख के आसिफ कुरैशी, हारून पाशा साहब, सलमान वारिस, अताउल्लाह साहब, मुख्तार साहब, इतने फ़ेलोज़, मसूद साहब और राव राशिद, अरशद साहब, मुश्ताक साहब, आप इतने मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में ये हमारा एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है और वी फील ऑनर्ड कि मुल्तान की ये कॉन्वोकेशन और अबू बकर शाहिद जो हैं ये कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के सुपरवाइज़र रहे, एग्ज़ामिनर रहे, फैकल्टी मेंबर रहे, और इनकी साइटेशन पढ़ना मेरे लिए एज़ाज़। डॉक्टर अबू बकर शाहिद ग्रेजुएटेड फ्राम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी in 1986. He did his post-graduation in radiotherapy in 1989 and joined Pakistan Atomic Energy Commission during the year of 1990. And he was the first person of 1986 class who did post-graduation in the radiotherapy and became the first specialist of that class. He joined Institute of Nuclear Medicine and Oncology, Lahore, as the director in 2012. He is the first and the only PhD in radiation oncology in Pakistan. He has got vast experience for treating and planning the cancer patient with radiotherapy and chemotherapy. He got 70 national and international publications with an impact factor of 47. He has supervised 3 projects as the chief investigator with International Atomic Energy Agency, addressing post-mastectomy radiotherapy in the breast cancer, brachytherapy in nasopharyngeal cancer, and PET-guided radiotherapy in lung cancer. He was the first oncologist to introduce LDR brachytherapy in cancer of nasopharynx in Pakistan. Under his supervision, the whole structure of Institute of Nuclear Medicine and Oncology, Lahore, has been renovated and upgraded, for which I think we all are the witness. It has become the first Pakistan Atomic Energy Commission Cancer Hospital to be recognized for 5 disciplines of College of Physician and Surgeon Pakistan. They include radiation oncology, medical oncology, nuclear medicine, diagnostic radiology, and clinical hematology. And the main role was of Dr. Abu Bakr Shahid. He is the member of PhD faculty, postgraduate examiner of University of Health Sciences, and I have already mentioned he is our supervisor, examiner, faculty member. A large number of his students in the field of oncology are serving the ailing humanity within the country and abroad. He was awarded Presidential Award of Pride of Performance in 2017. Ladies and gentlemen, I present to you Dr. Abu Bakr Shahid for fellowship without examination.
request Major General Mazhar Ishaq, Councillor CPSP, to read the citation of Professor Khwaja Junaid Mustafa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. It's an honor for me to read the citation of Dr. Khwaja Junaid Mustafa. Dr. Sahab has been trained and qualified in United Kingdom as an emergency physician, moved to Pakistan in 2012, and immediately recognized nationally for contributing towards emergency care and energy prevention. He has solid experience of innovation and leadership in challenging environments and successfully developed new fellowship programs in emergency medicine. In last 10 years, Dr. Junaid contributed hundreds of hours for developing emergency medicine fellowship training programs and also contributed his time and expertise for College of Physicians and Surgeons in developing emergency medicine curriculum and making the material for the examination. He has assisted the CPSP in the Brain Gain program for UK and Ireland. Since 2013, more than 30 of his trainees have been rotated through Ireland and UK for 2 years programs and known to be the best trained postgraduate trainees in Pakistan. He strongly believes that millions of lives can be saved by acquiring the highest standards of clinical proficiency in emergency medicine in Pakistan. With this mission, he has been elected President Pakistan Society of Emergency Medicine in 2021. On his dedication and tremendous work, CPSP has awarded fellowship degree in the field of emergency medicine. Ladies and gentlemen, I present Dr. Khwaja Junaid Mustafa. I request the President CPSP to present the college shield to the Honorable Chief Guest. I request the President CPSP to award degrees to the fellows and members. In the subject of anesthesiology, in the subject of anesthesia, Dr. Asif Mahmood, please line up over here. You go from that side and get your signature in the register. आप इधर खड़े हो जाओ, आराम से. Dr. Asif Mahmood. ये तो कुछ करो यार, जड़ा ने हनान अकबर, जब वो जाएंगे फिर अपन जाएंगे यार, उधर से ना परले पासों को डोनो. हिना इफ्तिखार,
मारिया कहाँ है? बताओ कौन कौन नहीं है? मोहम्मद अली आसिल, नाम बताते जाओ। मोहम्मद सादत, मोहम्मद जमान, डॉक्टर जुल्फकार हैदर, डॉक्टर जैनब, in the field of cardiology, Dr. Ehsan Ahmed, Dr. Anam Arshad, Dr. Fahad Ahmed, Hamza Ghafoor, बेटा जब मैं नाम लूंगा तब जा। डॉक्टर इमरान अली, डॉक्टर इनामुल हक, डॉक्टर खालिक, मोहम्मद आमिर शहजाद, मोहम्मद कासिम खान। यार ये बताते जाओ, मुझे मिसिंग है ये। सईद, मोहम्मद सईद खालिद, मुजफ्फर इकबाल, डॉक्टर सआदत, डॉक्टर उम्मुल बनीन कबीर। एक मिनट है, वो जाना चाहते हैं। Because of urgent piece of work, the chief guest wants to leave. इसका नाम क्या है? कुड़ियां ना आए, कुड़ियां ना आए। उर्वा इम्तियाज, in the field of chemical pathology, Dr. Kiran Shahzadi, Dr. Mehwish, Dr. Waqas Hanif, in the subject of clinical hematology, Dr. Hafiz Muhammad Nadeem, in the field of community medicine now, Dr. Asiya Aziz, Dr. Faryal Waheed,
Dr. Sundas Hamna, Dr. Uzma Arshad, critical care. In the field of critical care medicine, Zahid Siddiq Shad, in the field of dermatology, Dr. Amna Noreen Khan, Dr. Abir Aslam, Dr. Asiya Yusuf, Dr. Aisha Khalid, Dr. Ayman Shafi, Dr. Fahmida Malik, Dr. Iram Afzal, Leena Hafiz, Dr. Marukh, Nazia Hanif, Dr. Sadaf Badr, Dr. Shamsun Nisa Alvi. In the field of diagnostic radiology, Dr. Amna Khan, Dr. Aisha Zafar, Dr. Ghazina Hafiz, Ghazna, Dr. Huran Alia Hashmi, Huran Tariq, Ifra, Dr. Ifra, Dr. Iram Latif, Dr. Maham Fatima, Dr. Mariam Asghar, Muhammad Asif Shahzad, Muhammad Sajjad, Muhammad Umar Baka, Dr. Nudrat Wakar, Dr. Sahar Zulfikar, Dr. Sahrish Khalid, Dr. Soban Shahid, Dr. Sania Hamid,
Dr. Zahid Bashir in the field of endocrinology. Dr. Mudassar Ahmed in the subject of gastroenterology. Ali Raza. Ali Raza. आप अनम है डॉक्टर अनम खाकवानी डॉक्टर दीदार हुसैन सब दीदार कर लें सारे डॉक्टर फैसल अजीज डॉक्टर हाफिजा आयशा जहांगीर अभी खड़ी रहे अभी खड़े रहो हाफिजा डॉक्टर इरफानुल्लाह डॉक्टर मिसबा शाहिद डॉक्टर अफान कैसर मोहम्मद अम्मार खान मोहम्मद जुल्करनैन हैदर खान कुर्रतुल ऐन आप रमैसा हैं डॉक्टर रमैसा मलिक जैन डॉक्टर जैन अली In the field of hematology, we present Dr. Ambar Haroon. Dr. Huda Zamir. Dr. Imran Ahmed Khan. Dr. Quratul Ain. Dr. Sana Khan. Dr. Shumaila Kawal Hashmi. In the field of histopathology, we present you Dr. Muhammad Zishan Khan. Dr. Naveed Islam. In the field of medicine, Dr. Amina Gardezi. Dr. Aisha Jalis.
Dr. Farooq Jameel. Dr. Hasnain Salim. Dr. Muhammad Zaid Iqbal. Dr. Sara Malik. Dr. Seemal Aslam. Dr. Sheikh Muhammad Sikandar. In the field of nephrology, we have got 3 recipients. Dr. Khurram Bashir. Dr. Maliya Johar Zahdi. Dr. Ubaid Tansir. In the field of neurology, we present you Dr. Hafiz Zishan Kareem. Dr. Ijaz Ahmed. Dr. Kamal Khan. Dr. Muhammad Ali. Dr. Muhammad Asif. Dr. Muhammad Umair Zafar. Dr. Shazia Samreen. Dr. Shuaib Ali. Dr. Wasim Akhtar. In the field of obstetrics and gynecology, Dr. Abda Malik. Dr. Abira Sayyed. Dr. Ayman Javed. Dr. Aisha Ajmal. Dr. Aisha Naseem. Dr. Alia Parveen. Dr. Amara Khalid. Dr. Amber Bashir. Dr. Amna Yusuf. Dr. Amara Batul. Dr. Amna Kalsoom.
Dr. Anam Akram. Dr. Anam Dilshad. I request all the recipients to kindly sit down on their seats. Dr. Aksa Mariam. Dr. Asma Mumtaz. Dr. Asma Muzaffar. Dr. Asma Sajid. Dr. Aisha Bilal. Dr. Basga Sahar. Dr. Bushra Anwar. Dr. Bushra Kalsoom. Dr. Bushra Sabir. Dr. Faiza Suman. Dr. Fakhra Naseem. Dr. Fariha Anjum. Dr. Faryal Sarfraz. Dr. Ghazala Andaleeb. Dr. Gulshan Aisha. Dr. Hafzan Mehreen Gul. Dr. Hafsa Tawseef. Dr. Hafsa Kareem. Dr. Hina Akram. Dr. Hina Hanif. Dr. Hamna. Dr. Kalsoom Fatima. Dr. Kausar Fatima Baloch. Dr. Khatija Sundas. Dr. Komal Tuba Aftab. Dr. Laika Hassan. Dr. Madiha. Dr. Madiha Arshad.
Dr. Madiha Jameel, Dr. Madiha Sagir, Dr. Maniha Anam, Dr. Maria Saeed, Dr. Marina Izhar, Dr. Mehtab Seher, Dr. Mehwish Nigar, Dr. Mudassira Aziz, Dr. Muhammad Arif Khan, Dr. Munazzam Munir, Dr. Nabil, Dr. Nabila Shaheen, Dr. Nadia Kamal, Dr. Naila Iram, Dr. Naila Malik Ahir, Dr. Najma Shaheen, Dr. Neelam Abbas, Dr. Kaisra Qureshi. I request all the recipients who are standing in the aisle kindly sit in their seats. Kindly take your seats. Dr. Quratul Ain, Dr. Rabia Nazir Chaudhary, Dr. Rabia Rahman, Dr. Rahat Parwa, Dr. Rida Iqbal, Dr. Saika Manzoor, Dr. Saima Batul, Dr. Saima Khan,
Dr. Saliha Jabeen, Dr. Samina Athar, Dr. Samina Sattar, Dr. Shagufta Akhtar, Dr. Shagufta Parveen, Dr. Shabano, Gul, Dr. Shahla Tabassum, Dr. Shumaila Riaz, Dr. Sumaira Maqsood, Dr. Saida Sahar Zahra, Dr. Saida Wajiha Zahra Naqvi, Dr. Tahira Yasmin, Dr. Tausifuz Zahra, Dr. Umar Shehzad, Dr. Ambar Aruj Tahir, Dr. Badiyat Khan, Dr. Zarmina Kareem, Dr. Nausheen, Dr. Nasreen Anwar, Dr. Zeb Riaz, Dr. Zubaida Yassin, जी मैं कर दूँ। In the discipline of dermatology, Dr. Muhammad Abdullah Naveed, नाम क्या? In the discipline of anesthesia, Dr. Maria, in the discipline of gastroenterology, Dr. Suhail, क्या है ये? ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री।
in operative dentistry, Dr. Jahanzeb Parvez, Dr. Jahanzeb Parvez. Dr. Maimuna Ali, Dr. Maimuna Ali, Dr. Muhammad Ahmed, Dr. Muhammad Ahmed, Dr. Sadia Javed, Dr. Sufyan Salim, Dr. Sufyan Salim, Dr. Sayyida Afsha Manzoor, Dr. Sayyida Afsha Manzoor, Dr. Waqar Ahmed Khan, Dr. Waqar Ahmed Khan, ophthalmology. Now in the discipline of ophthalmology, Dr. Arsalan Salim, Dr. Arsalan Salim, Dr. Hafiz Muhammad Ahmed, Dr. Hafiz Muhammad Ahmed, Dr. Hafiz Muhammad Waqas, Dr. Hafiz Muhammad Waqas Zaman, Dr. Muhammad Afaq Shah, Dr. Muhammad Sarfaraz, Dr. Muhammad Abbas Khan, Dr. Muhammad Abbas Khan, Dr. Noreen Malik, Dr. Noreen Malik, Dr. Shahzeb, Dr. Shahzeb, Dr. Umair Abdullah, now the discipline of oral and maxillofacial surgery, Dr. Ehsanullah, Dr. Ehsanullah, Dr. Labiba Hassan, Dr. Muhammad Raza Zahid, Dr. Muhammad Raza Zahid, Dr. Muhammad Shuaib, Dr. Muhammad Shuaib, Dr. Ruqayya Jahan, Dr. Ruqayya Jahan, Dr. Wajiha Chaudhary, Dr. Wajiha Chaudhary. Now in the discipline of orthodontics, Dr. Ehsan Khalid, Dr. Ehsan Khalid, Dr. Anam Ikram, Dr. Anam Akram, Dr. Farhan Ali, Dr. Farhan Ali, Dr. Hafsa Riaz, Dr. Hafsa Riaz, Dr. Maryam Mushtaq, Dr. Maryam Mushtaq, Dr. Muhammad Hasnain,
Dr. Muhammad Hasnain, Dr. Sadia Nazir, Dr. Sadia Nazir, ये ऑर्थोडोंटिक्स है. Dr. Ushna Ahmed, Dr. Ushna Ahmed, now in the discipline of orthopedic surgery. खड़ा है? अच्छा, इससे पहले कार्डियोलॉजी में एक डॉक्टर इरफान कादिर, ये मिस हो गए थे, डॉक्टर इरफान कादिर. एंड नाउ द डिसिप्लिन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, डॉक्टर ओन मुजम्मिल इकबाल, डॉक्टर फैसल करीम, डॉक्टर फैसल करीम, डॉक्टर मेहर अंस मुमताज़, डॉक्टर मेहर अंस मुमताज़, डॉक्टर मंजूर हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद अली अहमद शेख, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, डॉक्टर मोहम्मद काशिफ, यहाँ तक हो चुका ये. The Department of Orthopedic, now Dr. Muhammad Mannan, मोहम्मद मुनव्वर नज़ीर, चले गए आप? चलिए ठीक है. नेक्स्ट हैं डॉक्टर नोमान अशरफ. अच्छा ठीक है. वाइट है क्या? वाइट है. राव मोहम्मद हारिस हमीद, डॉक्टर राशिद कमर, डॉक्टर शहराम शौकत, वाइट लाइन क्या है? जी जी ठीक है. डॉक्टर सलाहुद्दीन, जी सर मैं कर. डॉक्टर तौकीर नवाज खान, डॉक्टर उमेर अहमद, डॉक्टर उमेर इकबाल, डॉक्टर वकार अहमद. ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में एक कैंडिडेट मिस हो गए थे हमारे, डॉक्टर अहमद मुख्तार चीमा. अच्छा ठीक है. और ऑप्शन गायनी में मिस हो गई थी हमारी कैंडिडेट डॉक्टर परी इमाम गुल. फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोराइनोलैरिंजोलॉजी, डॉक्टर मोहम्मद हसन निसार, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद अनवर, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद अनवर, डॉक्टर सर मोहम्मद शकीब फैज. ये ठीक है. प्लीज बी साइलेंट, बी साइलेंट प्लीज. डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इसहाक, डॉक्टर राना मोहम्मद फर्रुख तस्लीम,
डॉक्टर राव अम्मार नासिर, डॉक्टर सारा समद कुरैशी, डॉक्टर शहला मजीद, now in the department of pediatric surgery, डॉक्टर मोहम्मद नदीम, डॉक्टर सर सादत फरीद, हाँ जी, now in the department of pediatric medicine, डॉक्टर अब्दुल रऊफ, डॉक्टर आयशा कयूम, यहाँ तक पहुँचे फिर करेंगे सर आगे अच्छा ठीक। डॉक्टर आयशा कयूम के बाद डॉक्टर अम्मारा अरशद, डॉक्टर आसिया नौरीन, प्लीज बी साइलेंट, डॉक्टर फजलुर रहमान, डॉक्टर फिजा महविश, डॉक्टर गुलाम अब्बास काजी, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद आमिर यूसुफ, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद हमजा, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शहजाद शुजा, डॉक्टर हाफिजा इतरत नसीम, हाफिजा इतरत नसीम, डॉक्टर इमरान मकसूद, डॉक्टर इरम नवाज, डॉक्टर इरफान अली, डॉक्टर कामरान हयात, डॉक्टर मदीहा नाज, डॉक्टर मलीहा सलीम, डॉक्टर महजबी, डॉक्टर मुबीना इफ़त, डॉक्टर मोहम्मद अवैस रूमी, डॉक्टर मोहम्मद इमरान, डॉक्टर मोहम्मद इमरान फैयाज, डॉक्टर मोहम्मद राशिद शब्बीर, डॉक्टर
मोहम्मद शहजाद मकसूद, डॉक्टर मोहम्मद शरीफ, डॉक्टर मोहम्मद शेर को कैसरानी, डॉक्टर मोहम्मद सुहेल अशरफ, डॉक्टर मोहम्मद तलहा मदनी, आगे चलते हैं, ऊपर खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर मोहम्मद वासिफ एजाज, डॉक्टर मोहम्मद जाहिद संजरानी साहब, डॉक्टर मोहम्मद जीशान, डॉक्टर मोहम्मद मनफूसा जाफर, डॉक्टर नादिया रफीक, डॉक्टर नफीसा बतूल काजमी, डॉक्टर सबा उरूज, डॉक्टर सादिया यूनिस, डॉक्टर सफदर हुसैन, डॉक्टर सना अरशद, डॉक्टर सना इलियास, डॉक्टर सनाउल्ला, डॉक्टर सानिया बतूल, डॉक्टर सिद्रा सलीम, डॉक्टर सिद्रा शफीक, डॉक्टर सिद्रा शाहिद, आगे चले, डॉक्टर सुहेल अंजुम, डॉक्टर सुंदस इरशाद, ठीक है, डॉक्टर सैयद हसन अहमद, डॉक्टर तहरीम काजमी, डॉक्टर ताजवर खान, डॉक्टर तूबा अलीम, ठीक है बच्चे, डॉक्टर वकास अहमद, डॉक्टर यासिर गफूर, डॉक्टर जुहेब हसन, डॉक्टर जुनैरा हमीद, डॉक्टर आकाशा अंबर, डॉक्टर इरम शब्बीर, आपका नाम क्या? सद्दक असरार, डॉक्टर मुकद्दस असरार,
डॉक्टर मोहम्मद इमरान, क्या नाम है? डॉक्टर अब्दुल्ला, डॉक्टर अब्दुल बासित, डॉक्टर आबिद हुसैन, डॉक्टर एहतिशाम इकबाल, ठीक है, ये ठीक है, डॉक्टर अंजुम फराज, क्या नाम है सबका? ठीक है, आगे है डॉक्टर जमालुद्दीन, डॉक्टर जमालुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद आतिफ, डॉक्टर मोहम्मद वसीम रियाज गुराया, डॉक्टर मोहम्मद वसीम रियाज गुराया, डॉक्टर सरमद अब्दुल रहमान खान, पीडियाट्रिक सर्जरी में कहाँ पे? आगे आ जाए ना, आगे आ तो बच्चा, एक मिनट बच्चे, बच्चे आप एक मिनट ठहर जाए, आप आओ बच्चे। डॉक्टर शहजाद अब्दुल्ला मोहम्मद खुजैमा, कहाँ से शुरू करना है? बच्चे आपका नाम? डॉक्टर आलिया, डॉक्टर आलिया बशीर, डॉक्टर फरवा नासिर, डॉक्टर मोहम्मद जुनेद हसन, डॉक्टर सैयद अली रुख पीरजादा, डॉक्टर अन्नम फयाज, द सब्जेक्ट ऑफ सर्जरी डॉक्टर अन्नम फयाज, डॉक्टर अकील मकसूद मसूद, अच्छा, डॉक्टर अकील मसूद, डॉक्टर बासित महमूद, मुबारक हो, मुबारक हो, डॉक्टर बुशरा महमूद, बुशरा गुलाम, डॉक्टर बुशरा गुलाम, डॉक्टर फरा सलीम, डॉक्टर फरा सलीम, डॉक्टर फरीहा अहमद, डॉक्टर हारिस, हारिस याद है पूरा नाम? मुबारक हो, मुबारक हो, सारे आगे माशाल्लाह। डॉक्टर हारिस रियाज, डॉक्टर काशिफ जब्बार, डॉक्टर काशिफ जब्बार, डॉक्टर मारिया जफर, मारिया बशीर, डॉक्टर मारिया बशीर, डॉक्टर मिर्जा शाहरुख बेग, डॉक्टर मुअज्जम मुमताज खान जोइया, डॉक्टर मोहम्मद अहमद, डॉक्टर मोहम्मद हसन शब्बीर, मुझे दोबारा आएगा,
डॉक्टर मोहम्मद हसन शब्बीर, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद नजफ आज़ाद, डॉक्टर मोहम्मद शाहजेब असगर, डॉक्टर मोहम्मद वकास अरशद, डॉक्टर मोहम्मद वकास अरशद, डॉक्टर नईम सरवर, आपका नाम बच्चे, डॉक्टर नाजिम हुसैन जैदी, डॉक्टर राबिया बसरी, डॉक्टर राबिया बसरी, डॉक्टर सनाउल्लाह मलिक, डॉक्टर साकिब अली, डॉक्टर शामीन खान, डॉक्टर सुमता खान, डॉक्टर सैयद अली नकवी शाह, डॉक्टर सैयद अली नकवी शाह, डॉक्टर तलहा करीम, क्या हाल है बच्चे, डॉक्टर उम्मेर ताहिर, डॉक्टर यासिर अब्बास, डॉक्टर यासिर अब्बास, डॉक्टर मोहम्मद जफर, डॉक्टर मोहम्मद रजा, सब पूरा नाम नहीं आपका यहाँ पे ना, डॉक्टर बशीर अहमद, हाँ मेरा नहीं, चलो क्या नहीं है, अच्छा ठीक है, फरहान, अच्छा ठीक है, डॉक्टर फरहान अली, डॉक्टर मोहम्मद अजफर सरफराज in the field of urology, डॉक्टर मोहम्मद अजफर सरफराज, डॉक्टर मोहम्मद राशिद जमाल, जी ये 372 नहीं आता, डॉक्टर सलमान जमील, डॉक्टर मोहम्मद फरहान कुरैशी, इमरान ठीक है जी ठीक है सर, डॉक्टर मोहम्मद इमरान, now the MCPS candidates will start. Professor Ghulam Mustafa Bittu, Jaz Hussain Anjum, Jaz Hussain Anjum, Asif Hussain, Asif Nadeem, Asif Nadeem, Faisal Javed, Hafsa Tariq,
हम्माद हुसैन, हुमा खालिद, इलियास महमूद, मोहम्मद अवैस अकरम, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इमरान, मोहम्मद शौकत इस्माइल, मोहम्मद शहजाद कादिर, नादिर अदील, निसार अहमद शाह, कासम अली, सना जाहिद, in the subject of community medicine, Ghazala Yasmin Iqbal, in the subject of dermatology, Asma Naz, Sadia Ayub, Sayyid Noor Akbar Shah, in the subject of diagnostic radiology, Fawzia Shahzadi, Iram Aslam, Nazia Nazir, Shazia Tasneem, Sidra Mehboob, Sayyida Aruj Zahra, in the subject of family dentistry, Aisha Javed, family medicine, Abdul Jabbar, Dr. Aslan, Dr. Asam Bakar, Dr. Asma Ijaz, Dr. Maaz Ahmed, Mehbubur Rahman,
मिराज फातिमा, मोहम्मद असलम, मोहम्मद फ़हीम जावेद, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल, भावनगर का। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद रज़ा, मोहम्मद तैयब इब्राहिम, मुनज़्ज़ा गफूर, डॉक्टर निगत नौरीन, कुरतुलैन, सैफुर रहमान, सलमान सफदर, समीना रफीक, शाइस्ता नौरीन, वसीम नाज, the subject of forensic medicine, Khurram Salim, Khurram Salim, the subject of obstetric and gynecology, Asifa Zahid, आबिदा जावेद, आफिया मुमताज़, अरूसा मंजूर, आसिया परवीन, फरजाना यासीन, फौजिया सदफ। इसके बाद आपके ग्रुप फ़ोटो भी होंगे कौंसल के साथ, आपके ग्रुप फ़ोटो होंगे तो बैच बनेंगे। इसके बाद तो आपने सब ने आके उसके अंदर फ़ोटो भी खिंचवाने हैं। फौजिया सदफ हो गई, फौजिया खनम, इकरा गफ़ार, नसीम,
announcement, एक announcement सुन लें. Shortly after this award ceremony, there will be a group photo with council. There will be a group photo with the council shortly after this award ceremony. So you should all be here. Muhammad Imran. Akina Abid. Nusrat Munir.
I request the present